Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem, amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Assalamu alaikum to all Muslims and welcome all foreigners to my YouTube channel. Today the topic we have to discuss is classifications of compound. In our early lecture we studied about compound. That compound is a product that formed by the combination of elements in a fixed ratio. But the compound is also classified into two types. There are two types known to us of compounds. One is ionic compound and the second is covalent compound. What is ionic compound? Ionic compound is a form of compound that cannot found freely. Why it does not find freely? There is a reason for that. Because every ionic compound, ions means charge, it may be positive or negative. Ions never live freely. They always attract the opposite charge. So every compound that is ionic, it must attracted and bounded by other opposite compound. That's why they never lived freely. They form crystalline formations, crystallitic formations, which is their physical form. So as they formed by opposite charges, so they cannot release each other easily. So we need high energy to break them, to melt them and to boil them. So when something needed a high energy to melt them or boil them, they are known as the highly melting points and with high boiling points. So the ionic compound, they cannot live freely, they are in crystallic form, they have high melting and boiling point. And there are chemical formula is always written in formula unit. For example, here the Na and Cl, sodium chloride, which is known as home salt, it's Na as positive charge and Cl is negative charge. Both are formed by their ionic bonds. So they are negative and positive charge, so they both are ion. They bonded, they formed a compound because it's in fixed ratio. Fixed ratios means compound. So they are ions known as ionic compounds. And what's covalent compound? Covalent compounds never needs ionic states. They form easily, they found freely. Molecule, I think molecule is best definition and representation of ionic compound. They found freely, for example, H2O, water. That's what known as classification of compounds in two types. And the next is mixture. We discussed it early in our early lecture that mixture is not found by fixed ratios. I'm giving you here an example. If you want to make juice, you never need fixed ratios. If you add some quantity of sugars and some quantity of water, and whether the water is extra, you add them into it, it always become that juice. It means never quantity or ratio disturb it. It never needs any ratios. They may be homogeneous or heterogeneous. Homogeneous, we say in our early lecture that homogeneous is a mixture that light cross them easily. We can see across them. Air is best example of it. And heterogeneous, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. Homogeneous example is air and the heterogeneous example is wood, soil, rock and wood. The mixture of soil, wood and rock. So that's known as mixture. Mixture is anything that formed by two or three elements without any fixed ratio. That's called mixture. A mixture does have qualities of both are as reactants found in it. It has their all properties in it. As I give you an example, when you mix sugar plus water, it become a solutions.
which is sweet like sugar and liquidy like water. So it has the qualities of both reactants. Compound is different from it because it has its own unique properties, not like the reactants. So here we compare them, compounds and mixture. Compound, what is compound? I think its first point maybe like it has a fixed ratio. It needs ratio to form a compound. But mixture does not need any ratio. It can form by any atoms joined by how much you add them, it doesn't matter. And the reactants lost their identity. When you formed a compound, when a compound is formed, its reactants lost their identity. It does not show their property. But in mixture, they have their own properties. All the reactants show their property. It has chemical formula. When compound formed, it gave us a chemical formula. For example, NaCl, sodium plus chlorine. It gives us NaCl. It has unique formula. It has its own atomic number and atomic quantity. And in mixture, they are simply physically mixed. So no formula is needed for that. Oh, and the compound does not separate it easily by physical means. Means you need a chemical procedures. You need a chemical procedure to separate them. And for mixture, you does not need any chemical procedure. You just easily separate them. And the next is chemical formula. We discussed earlier that it has chemical formula, and the mixture does not have chemical formula. They have fixed melting and boiling point, but the mixture does not have fixed melting and boiling point. I was tired, sorry for today's lecture. Classifications of compound is done into two things. One is ionic and second is covalent. What is ionic? Ionic means formed by the ions, negative and positive charges. So they have never lived freely due to their ionic positions. Crystallic form, they form crystallic forms. When two opposite charge join, they form a crystallic form. They show due to their opposite charges. So as they are joined, they are created by opposite charge. So they have high boiling point and high melting points. And they have their own formula units. It means their formula is written in the formula unit. For example, NaCl and potassium bromide KBr. And the difference between covalent and ionic is covalent does not matter whether it is made up of positive or negative and negative. So they are not made up of ions. So they are not like them. They are free and form molecules. And molecules, I think the molecule is best definitions of covalent bond. H2O, water is their example. The next topic for today is mixture. What is mixture? Mixture is when two or more elements formed and joined without any chemical ratio, without any chemical procedure, they form mixture. A mixture does not need any fixed ratios. They can form by any ratios. For there are two types. First is homogeneous and the other is heterogeneous. Homogeneous means it's alike. Its mixture is alike. We can see across them. Light travel across them. Air is their best examples. And the heterogeneous means it does not show same. It does not look alike. Light does not travel across it. They are. And the next is they are different between mixtures and compound. It's easily seen that compound is much better than the mixture. Why? Compound has its fixed ratio. It has its own property. It does not show the reactant's property. It has its chemical formula. It just cannot separate it easily. It has its chemical formula and it is high melting and boiling point. And when we see the mixture does not have its own properties, does not have its own quality, does not have its own identity. It shows identity, quality and properties of their reactants.
that can be separated in physical means. They can form in physical means, physical ratios by physical method, and they can separate it by physical means. It does not have physical ratio, does not have ratio, it does not have same formula, and we cannot, it does not have fixed melting and boiling point. अब आप सबके लिए आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। हम कंपाउंड्स को कितने हिस्सों में मजीद तकसीम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो, हमारे पास एग्जाम है। पहली आयनिक कंपाउंड है, दूसरी कोवलेंट कंपाउंड है। आयन का मतलब होता है चार्ज, चाहे वो मस्बत चार्ज है चाहे वो मनफी चार्ज है। तो मस्बत या मनफी चार्ज हो सकता है। तो जो मनफी और मस्बत चार्ज वाले होते हैं, जो कि हमें पता है कि आइंद है, वो आजादाना नहीं रह सकते। अगर वो मनफी है तो उसने किसी मस्बत के साथ चार्ज बनाना ही बनाना है, अगर वो मस्बत है किसी मनफी के साथ उसने चार्ज बनाना ही बनाना है। तो ये कलमी हालत में पाए जाएंगे, यानी मुखालिफ से जब ये मिलेंगे तो ये कलमी हालत में पाए जाएंगे। जो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होंगे ये कलमी हालत में पाए जाएंगे। जैसे नमक इसकी मिसाल है। तो जैसे पहले हम कह चुके हैं ये मुखालिफ चार्ज से मिलकर बनते हैं, तो मुखालिफ चार्ज आपस में उसको बहुत सख्ती से पकड़ते हैं। तो उनको अलहदा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको कलमी हालत से लिक्विड हालत में लाने के लिए, मेल्टिंग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको, फिर दोबारा बॉयल करने के लिए, उस लिक्विड को उबालने के लिए। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होंगे। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे पास इनका जो वो बनेगा फार्मूला, इनको जो जाहिर करने के लिए जो फार्मूला बनेगा केमिकल, वो फार्मूला यूनिट में होगा। जैसे घरेलू नमक है या पोटेशियम ब्रोमाइड हमारे पास है। कोवेलेंट इसके बिल्कुल मुखालिफ है, इसको मनफी यानी कि मुखालिफ चार्ज से घिरने की जरूरत नहीं है, ये आयंस नहीं है। मॉलिक्यूल इसकी सिंपल मिसाल है ये, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो मुराद ये कि ये फ्री ऑफ चार्ज है। यानी कि इसे आप कह सकते हैं जैसे इसको बनना तो मनफी चार्ज है, यानी कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके बना हुआ है, तो ये फ्री है। तो मॉलिक्यूल इसको मेरे ख्याल में इसको बयान करने के लिए बेहतरीन लफ्ज, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड को बयान करने का बेहतरीन लफ्ज आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, या ना तो मनफी चार्ज शो कर रहा है या नेगेटिव, ना तो जमा शो करा रहा है। तो ये वैसे ही है, इसकी मिसाल पानी में ले लेते हैं। मिक्सचर क्या चीज है? मिक्सचर भी जैसे कंपाउंड है, सेम इसी तरह का है। छोटा सा डिफरेंस में ले जाता है। डिफरेंस ये रह जाता है कि इसको बनने के लिए कोई रेशो नहीं चाहिए, इसको बनाने के लिए रेशो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दो एलिमेंट लेंगे, उनको आपस में बगैर किसी निस्बत के, दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उनको बगैर किसी निस्बत के जब आप मिक्स करेंगे तो आपके पास एक क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर आ जाता है, दूसरा हमारे पास हेटेरोजीनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? ये एक जैसा होगा, तो इससे जो चीज बनेगी, जो इसका हमेशा बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा वो बिल्कुल होमोजेनियस एक जैसा होगा। आप उसके आर पार देख सकते हैं, उसके आर पार रोशनी गुजर सकती है। आप उसको यानी कि अगर वाजे लेकर हाथ में लेकर जैसे लेकर देखेंगे, किसी चीज में देखेंगे, आपको उनमें कोई और चीज की मिलावट नजर नहीं आएगी। हवा इसकी बेहतरीन मिसाल है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर से मुराद होगा ऐसा मिक्सचर जो एक जैसा नहीं है, जैसे आपके सामने पड़ा हो तो आपको पता चल जाएगा ये यानी कि एक ही चीज नहीं पड़ी हुई है। जैसे मट्टी हो जाती है, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी कंकरियां डाल दें, जैसे बजरी वगैरह होती है, या इसके अंदर थोड़ी सी मट्टी अपना लकड़ी वगैरह का बूरा डाल दें, तो ये जो तीनों चीजें पड़ी होंगी अगर मिक्स भी कर देंगे तो ये वादा नजर आ रही है कि ये मिक्सचर यानी कि मिक्सचर है और ये एक जैसा नहीं है, इसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, आर पार आप नहीं देख सकते। ये होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस है, इसमें रेशो की जरूरत होती नहीं है। अब हम इन दोनों का मुवाजना करेंगे, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क जो इसके अंदर हमारे पास हो रहा है कि कंपाउंड जब बनता है तो जो रिएक्टेंट हैं, तो वो एलिमेंट जो इसको मिलकर बना रहे हैं, उनकी शनाख्त खत्म हो जाती है। जो कंपाउंड बनता है उसकी अपनी शनाख्त है। जैसे हम पहले भी हम मिसाल में बता चुके हैं कि हमारे पास जैसे ही पानी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को गैस, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, मिलते हैं तो ये क्या बन जाते हैं हमारे पास? पानी लिक्विड स्टेट में। तो ये हाइड्रोजन की आइडेंटिटी भी खत्म, ऑक्सीजन की आइडेंटिटी भी खत्म, जस्ट उसकी अपनी बतौर कंपाउंड वाटर उसकी हो जाती है। इसके अंदर जो होता है मिक्सचर के अंदर, आप चीनी और पानी को लेके मिक्स करें तो शरबत बन जाता है। ये हमारे पास मिक्सचर है। तो आप देखेंगे जो शरबत है वो चीनी के जैसा मीठा भी है और पानी के जैसा लिक्विड हिमाय हाथ में भी है। तो इसके अंदर दोनों की खसूसियात है। तो ये यानी कि इसकी अपनी कोई खसूसियत नहीं होती, इसकी अपनी शनाख्त होती ही नहीं है। तो जो कंपाउंड होते हैं इनके बनने के लिए केमिकल
फार्मूला चाहिए, इनका अपना केमिकल फार्मूला होता है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि NaCl है, HBr है, KBr है, H2O है। तो ये खास फार्मूला होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर एटम्स की तादाद सेम होती है। जैसे आप चेंज करेंगे वो नई चीज बन जाएगी, वो कंपाउंड नहीं रह जाएगा। तो इसके अंदर जो होता है कोई इसकी वो नहीं होती, इसका वो नहीं होता, फार्मूला नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर आप चीनी चाहे 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें, चाय की मिसाल ले लें, दुनिया में लोग मुख्तलिफ तरीके से पीते हैं, कोई कितनी पत्ती डालता है, कितनी चीनी डालता है, तो ये अलग अलग रेशो होती है। तो इसके लिए ना तो इसका फार्मूला है, ना इसकी अपनी कोई रेशो है। तो जो कंपाउंड होता है आप उसको ऐसे फिजिकली अलग नहीं कर सकते, वो जैसे बना हुआ है उसको केमिकल्स मीन से आप अलग कर सकते। जैसे आप वाटर को भी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सिंपली तरीके से अलग नहीं कर सकते, आपको केमिकली उसको इलेक्ट्रोलाइट करके अलग करना पड़ता है। और जो ये होते हैं इनको आप इजीली अलग कर सकते हैं। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी या नमक डाला हुआ है, आप पानी को बॉयल कर लेते हैं, बॉयल करने के बाद पानी उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है, चीनी भी सेम तरीके से सेपरेट हो सकती है। यानी कि आप इसको फिजिकल तरीके से अलग कर सकते हैं। इसका जैसे कहा कि इसका जो है यानी केमिकल फार्मूला है, उसका वो नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। तो ये तो फिक्स्ड है। जब एक चीज फिक्स्ड है कि उसके अंदर इतने एटम होने हैं, उसके अंदर इतने एटम मिलने के बाद इतनी रेशियो, इतनी निस्बत है, फिर वो चीज बन रही है, तो ऐसी चीज को तोड़ने के लिए भी मखसूस एनर्जी की जरूरत होती है, मखसूस ताकत की। तो इनके अंदर आपकी एनर्जी जो होगी तोड़ने के लिए, चाहे उसको आपने पिघलाना है, चाहे उसको आपने उबालना है, एक मखसूस एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कभी कितनी चीनी डाली, कभी कितना उसमें दूध डाला, तो ये इसका फिक्स नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ फिक्स होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।